बंद कर दो बुक को। So hello guys. ओह वॉच कौन सी है? अरे कोई नहीं भाई, ऐसी वॉच है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? रितु, अमन, लेट्स गो। यस यस, वेरी गुड, लेट्स गो। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर बैक विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। इन टुडेस video we will be discussing about all the ICR based, ISSS based and the most expected questions which are like expected to be asked in the exam. So are you guys ready? क्या सब ready हो? You are pursuing your MSc from which university? Okay. So let's begin with today's session. But before that, let me briefly introduce myself. I'm your mentor Rohit from Soil Science, and I'm currently pursuing my masters in Department of Soil Science from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh. And I have completed my undergraduation from Anand Niketan College of Agriculture, Anand Varora, which is affiliated to Dr. Punjab Rao Deshmukh Krishi Vishwavidyalaya, Akola. So let's begin with today's session. Yes, good evening Satya. Welcome everyone. So are you all excited for today's session? Yes, very good. So in today's session, we will be dealing with some of the ISSS based questions and most expected question sets which have been designed by the IRI toppers. So just try to answer the first question. The first question is asking about the rock having specific gravity less than that of water. Okay, very good. The correct answer for this question is pumice. Definitely pumice, as we know that the specific gravity of pumice is less than that of water, that is less than 1. So apart from this, can anyone tell me like which two other rocks have similar composition as that of pumice, or pumice has a similar mineral composition as that of two different rocks? Which two different rocks are those? क्या कोई बता पाएगा कि ऐसे कौन से दो रॉक्स है जिनका मिनरल कंपोजिशन बिल्कुल प्यूमाइस के एग्जैक्टली सिमिलर होगा? क्या कोई बता पाएगा? तो चलो याद रख लेना, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट ऐसे दो इग्नियस रॉक्स है जिनका मिनरल कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल प्यूमाइस से मिलता जुलता है, बट प्यूमाइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. Okay, so here is the explanation for this. Pumice has sponge like structure and it floats on water because its specific gravity is very less than that of water. Then pumice is similar in composition to rhyolite. It is rich in silica and light porous volcanic rock. And then rocks और minerals में confusion नहीं create करेंगे. Sometimes rocks और mineral में काफी confusion हो जाता है. Light और heavy rocks और light and heavy minerals में two different categories है. Like minerals are categorized on the basis of specific gravity into two different types, that is heavy minerals and light minerals. अब heavy minerals किसको बोलेंगे? ऐसे minerals whose specific gravity is more than 8.5. Such minerals are known as
heavy minerals, and examples of heavy minerals are pyroxene, amphibole, garnet, zircon. Olivine is also another example of heavy mineral. इस चीज को भी याद रख लेंगे. These are some important points about rocks and minerals जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. Then apart from that, light minerals are those whose specific gravity is below 2.85. ऐसे मिनरल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.85 है, ऐसे मिनरल्स को लाइट मिनरल्स कहेंगे. सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉक्स. बी श्योर, क्लियर हो जाओ कि हम यहाँ पे रॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स. ऊपर जो था pumice was a rock. We were talking about pumice and it was a rock and it has specific gravity less than that of water, hence it floats on water. But here are heavy and light minerals. यहाँ देख लेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन दैट ऑफ 2.85. लेकिन वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कोई बता सकता है? Can anyone tell the specific gravity of water? Yes, very good. Nikhil sir, specific gravity of water is definitely 1. So this is the major difference when we are categorizing heavy rocks and light rocks and minerals. Very good Raman, very good. Very good Satya, Devika, very good. Just keep the session interactive. This is what we are expecting in this days of preparation phase, right? So some examples of light minerals are quartz, mica, especially muscovite and feldspar are the common example of light minerals. So moving to the next question, we have statement based questions. Just try to answer the question. So what is first statement asking about? Like talking about statement 1 is saying that basalt and gabbro are basic and volcanic rocks. And statement 2 is saying that granite and rhyolite are acidic and plutonic rocks. So what will be the correct answer? Both true. No, no, no. This statement, both the statements are not true. Just think over it. ए इसका आंसर नहीं होगा. सोचो, कुछ तो गलती है इस स्टेटमेंट्स में. ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और डेफिनेटली क्वेश्चन सेटर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया है. सोचो इसमें क्या गलत है. Very good, very good, very good, Mangala, Nikhila. Both the statement are false because, see, let's see what thing is going wrong here. See, basalt and gabbro both are basic rock, but they are not volcanic rocks. Granite and rhyolite both are acidic in nature, but they are not plutonic. अगर ये plutonic rocks ऊपर होता और volcanic rocks नीचे होता, तो दोनों statements correct होती. But since this one word is making the statement false, both the statement are becoming false. See, because the statement is collectively asking about basalt and gabbro and granite and rhyolite. So एक word के वजह से दोनों भी statements गलत हो जाते हैं. So ऐसे ही mistakes एग्जाम में नहीं करनी है और यही चीजें याद रखनी है, right? So here we will see an entire table जो हमको easily प्लूटोनिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और वोल्केनिक रॉक्स में एक प्रॉपर कंपैरिजन याद रखने में हेल्प करेगा, राइट? सो सी हियर, ग्रेनाइट, टोनालाइट, रायोलाइट एंड डकाइट, these are rocks of acidic nature. Like acidic nature, what will be the property of acidic rocks? Like acidic rocks कब होंगे? When they have more than 60% of silica, right? So such rocks will be termed as acidic rocks. But granite and tonalite are plutonic in origin, whereas rhyolite and dacite are volcanic in origin. Similarly, when we come to foidal cyanite and gabbro are basic in nature because they have less amount of silica, but they are plutonic in origin. Whereas phonolite and basalt, these are volcanic in origin. इस टेबल को अच्छे से याद रख लेंगे. दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एज सच. इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से रिवाइज करना, कहीं भी अपने टेबल के आगे चिपका लो, बिकॉज इसमें से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस है, राइट? हाँ, ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक है. सी हियर, क्वेश्चन क्या है? ग्रेनाइट प्लूटोनिक है बट रायोलाइट तो प्लूटोनिक नहीं है ना. रायोलाइट वोल्केनिक है, राइट? सी हियर वी कैन सी दैट rhyolite is a volcanic rock and here the statement is a combined statement. So
So clear है? Shall we move to next question? Okay, okay. So next question is asking about calculate the leaching requirement of irrigation water having electrical conductivity of 5 decisimon per meter and electrical conductivity of drainage water is 10 decisimon per meter. So just try to answer this question. क्या है given EC of irrigation water and EC of drainage water? क्या है EC of irrigation water? 5 decisimon per meter. And EC of drainage water is 10 decisimon per meter. Very simple question. Just give the answer for this question. Yes, very good, very good, very good. Option A will be the correct answer for this question, as we know that the formula of leaching requirement is EC of irrigation water minus EC of drainage water. And if we want the answer to be in percentage form, we will multiply this with 100. So simple, that EC of irrigation water divided by EC of drainage water into 100 will give us our leaching requirement. But can anyone tell me what is leaching requirement? What exactly is the concept of leaching requirement? ठीक है, लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट तो कर ली, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप भी कर लिए, हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, बट लीचिंग रिक्वायरमेंट किसको बोलोगे तुम? लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर इज नोन एज लीचिंग रिक्वायरमेंट? अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा वाटर टू लीच आउट सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? To reclaim, okay, amount of water required to leach in saline soils so as to reclaim. नहीं, ये भी पूरा करेक्ट नहीं है. अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू लीच soluble salts, ये पूरा करेक्ट नहीं है, पूरा करेक्ट नहीं. एक स्पेसिफिक वर्ड मिस कर रहे हो. द वाटर दैट इज नीडेड टू लीच डाउन द soluble salts. हाँ ठीक है, वाटर दैट इज नीडेड टू लीच डाउन द soluble salts, सही बात है, लेकिन कहाँ से? सी, लीचिंग रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर. लाइक ये हमने क्या कैलकुलेट किया? परसेंटेज फॉर्म में 50% अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट 50% किस चीज को बोलेंगे भाई? लीचिंग रिक्वायरमेंट 50% उस चीज को बोलेंगे कि 50% ऑफ टोटल इरिगेशन वाटर. अगर हम किसी फील्ड में 100 लीटर्स वाटर का इरिगेशन दे रहे हैं, तो उसका 50% जो है अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर दैट शुड पास थ्रू रूट जोन, देन इट विल लीच द टोटल salts from the soil. अगर इतना 50% of the total water will pass through root zone, then and only then it will be able to leach out the total salt concentration present in the soil. So that will be called as leaching requirement, amount of water that should pass through root zone. To effectively leach out the salts, right? So this will be called as leaching requirement. So moving to the next question. Next question is another assertion reason type of question. Just go through the question. आज के पेपर में रॉक्स और मिनरल्स से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस है. So just try to answer the question. नेफेलिन क्या है भाई? नेफेलिन किस चीज का एग्जांपल है? नेफेलिन कौन सा मिनरल है? कैन एनीवन टेल? नेफेलिन. अच्छा छोड़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट को जाने तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. ओलिवाइन, ओलिवाइन इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. इतना बता दो बस, ये सही है या गलत है? ओके, ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट. यस यस यस. ओके ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है,
like both assertion and reason are individually correct, पर दोनों statements का कोई individual relation नहीं है, दोनों ही separately correct statements है. Nephelin is a important example of ferromagnesian mineral, ये याद रख लेंगे, ठीक है. So here I have mentioned some of the important minerals and their constituent items, like constituent sources, like what other items they have other than silicon and oxygen. So all the nutrient elements are mentioned in the table. So this table is also an important. Second तो सही है, हाँ second सही है, right, second सही है, second बिल्कुल सही है, और first भी सही है. Like नेफेलिन का फॉर्मूला होगा सोडियम NaAl कुछ है, एक मिनट बता रहा हूँ उसका फॉर्मूला. NaAl इंटू डॉट के, ये है नेफेलिन का फॉर्मूला. तो इसको भी अगर याद रख सकते हो तो रख लो, या फिर इतना भी याद रखोगे कि नेफेलिन इज डिफिशिएंट इन सिलिका बट रिच इन सोडियम एंड पोटेशियम. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही है अपनी अपनी जगह, बट देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, राइट. सो दिस टेबल इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मिंग टेबल. यहां से अगर पूछा जाए कि पोटेशियम और आयन के सोर्स वाला कोई मिनरल बता दो तो बायोटाइट इसका आंसर होगा, राइट. कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सोर्स वाला अगर कोई एलिमेंट पूछा जाए तो एनर्थाइट उसका आंसर होगा. सो दिस टेबल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मिंग एरिया. So moving to the next question, we are asked about hydrometer method of mechanical analysis is not effective in. Yes, Satya. So moving to the next question, we have hydrometer method. Okay, Aman is saying that D is the correct answer. Devika is also saying D is the correct answer. Okay, ठीक है. ये तो like easy question है कि hydrometer method is not effective in all the three types of soil, but effective क्यों नहीं है वो भी easily समझ लेंगे. Like what's the concept behind of like ये तीनों soils में क्यों effective नहीं है. See, hydrometer method में हम क्या करते हैं. In hydrometer method, we are inserting the Boyko's hydrometer in the measuring cylinder, and this hydrometer method is working on principle of Stokes law. So अगर कोई भी soil organic matter rich है या calcareous है या saline soils है, तो saline soils अगर salt rich soils होंगी तो क्या होगा. सॉल्ट रिच सॉइल्स होंगी तो जो सस्पेंशन है हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट. देयर विल बी मोर salt concentration, and more salt concentration will be definitely having an indirect effect on the density. So this will be not effective in saline soils. Similarly, in calcareous soils, the calcareous soils will affect the dispersion. Like calcium will facilitate the flocculation of soil particles and it will not let the sand, silt and clay particles settle effectively, right. And similarly in organic soils, like soils rich in, like muck soils are rich in organic matter, right. So in that soils dispersion will be difficult and hence this hydrometer reading will be affected. So hydrometer method is not suitable in saline soils, calcareous soils as well as muck soils. Exactly opposite to it, this international pipette method is highly suitable in saline and calcareous soil but not suitable in muck soils. And then international pipette method is an extensive, like for particle analysis it is very highly recommended method of particle analysis where we will establish the relation between sand, silt and clay particles, right. So moving to the next question. The question is asking about which of the following processes is not included under fundamental pedogenic processes. Just try to answer the question. It is a very simple question. Option B. Yes, very good, very good. Transformation is not included in fundamental soil forming pedogenic processes. So humification, elevation and illuviation are
the fundamental soil forming processes, right? So let's understand where this transformation comes from. Can anyone tell me who gave the fourfold basic soil forming processes? Very good, very good, very good. Simonson gave the fourfold basic soil forming processes which had the steps of addition. Sir, इतने सॉरी गाइस, असुविधा के लिए खेद है, कुछ तो हुआ था यहाँ पे, अचानक से लाइट वाइट चली गई थी, भूत आ गया था गाइस। भूत 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 एकदम भूत आ गया था, तो गड़बड़ हो गई थी। तो रेडी, शुरू करें फिर से? लाइव इज नॉट कमिंग, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अब बफर हो रहा है या चल रहा है सेशन, एक बार बता देंगे? नाउ इट्स ओके, ओके। एक बार सर आप ना मैसेज कर देना फिर से, ठीक है? तो चालू करें फिर से, जहां से रुके थे वहीं से शुरू करेंगे। Which of the following processes is not included under fundamental pedogenic processes, right? Transformation is not included under fundamental pedogenic processes. So एक बार ये बताएंगे मुझे फंडामेंटल पेडोजेनिक प्रोसेसेस के अलावा जो बेसिक पेडोजेनिक प्रोसेसेस थी, झटपट पटापट इसका जवाब देंगे मुझे, झटपट पटापट। बेसिक जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस थी हमारी, वो किसने दी थी? जिसको हम फोर फोल्ड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, एडिशन एंड लॉस। ओके, इसका प्रॉपर सीक्वेंस बताओ यार, प्रॉपर सीक्वेंस बताओ। अगर तुमको क्वेश्चन पूछ लिया कि अरेंज द फॉलोइंग फोर फोल्ड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो क्या जवाब दोगे? फोर फोल्ड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। यस, ये साइमनसन ने दी थी, सही बात है, पर इसका सीक्वेंस क्या होगा एकदम से? लाइक आई नीड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस बाय साइमनसन। 1 2 3 और 4, इन चारों प्रोसेसेस को, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एडिशन, then loss, transformation and translocation। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन करेक्ट ऑर्डर, सो इसका आंसर होगा एडिशन, देन फॉलोड बाय लॉस, देन फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉलोड बाय ट्रांसलोकेशन। These are the fourfold soil forming processes by Simonson. See, यहाँ पे भी मेंशन है एडिशन और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, mineral and organic matter in the soil, then loss of above minerals from the soil, transformation of mineral and transfer, right? So this was a very easy question। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, बिल्कुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अनदर स्टेटमेंट वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Given below are two statements labeled as statement 1 and statement 2. Statement 1 says that in high water potential, like high potential, water retention is controlled by soil structure, sorry, soil texture, and in low potential, water retention is controlled by, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।
ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो समझते हैं कि क्यों ये बोथ द स्टेटमेंट्स फॉल्स है ना। कंसिडर करो, अब हम कंपेयर करेंगे सॉइल वाटर कंटेंट, लाइक सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स, और उनके रिलेटेड सॉइल वाटर सक्शन को, राइट। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स, या कंसिडर ऐसे कंसिडर करो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल्स की बात करते हैं, लाइक हाईली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, इसमें क्या होगा सक्शन, लाइक व्हाट विल बी द सक्शन एट विच फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में वाटर कितने प्रेशर पे होल्ड किया गया होगा, लाइक व्हाट विल बी द मैट्रिक सक्शन इन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, देन सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी और नॉर्मल कंडीशन। ओके, सक्शन इज लो, सक्शन हाई इन लो वाटर एंड लो इन हाई वाटर। ओके, सही है, सही बात है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में सक्शन कितना होगा। वेरी गुड अमन, अमन जीरो एटमॉस्फेयर पे होल्ड किया जाएगा, राइट। एट फील्ड कैपेसिटी द सक्शन विल फॉल डाउन टू -1/3 एटमॉस्फेयर, राइट। और जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट डिक्रीज होता जाएगा, मोर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ दिस सक्शन विल बी कमिंग, लाइक, है ना। एक अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे हमारा -61 एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगा, वैसे वैसे सक्शन भी कम होगा। तो हाई वैल्यू है सक्शन की, नेगेटिव नहीं है वैल्यू, मतलब हाई है, राइट। और जैसे जैसे नीचे जा रही है, मतलब वैल्यूज लो होते जा रही है। तो जितना ज्यादा वाटर कंटेंट, उतना ज्यादा पोटेंशियल और उतना कम सक्शन, राइट। हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स वाटर रिटेंशन इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर। अब ये भी समझेंगे क्यों, कि व्हेन वाटर पोटेंशियल इज हाई एट दैट टाइम इट विल बी कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर। क्यों, ये समझते हैं, राइट। अगर किसी सॉइल का पोटेंशियल हाई है ना, 0 एटमॉस्फेयर मतलब हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। वाटर कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब सक्शन क्या होगा, कम होगा। सही है, समझ आ रहा है। यस, वेरी गुड अनिल, सही है ना, कि अगर सक्शन कम है तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, तो वाटर विल बी डेफिनेटली फिल्ड इन माइक्रोपोर्स एज वेल एज माइक्रोपोर्स, मतलब सारे पोर्स जो है दैट विल बी ऑक्युपाइंग वाटर, राइट। सो इन दिस कंडीशन, जब वाटर ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, सक्शन कम है, पोटेंशियल भी ज्यादा है, एट दैट टाइम दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर। बट एग्जैक्टली अपोजिट, जब जब पोटेंशियल लो होगा, सक्शन ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट कम होगा, और माइक्रोपोर्स में जो वाटर होगा उस पे सारा डिपेंडेंस आ जाएगा, इन दैट केस वाटर कंटेंट विल बी, वाटर रिटेंशन विल बी कंट्रोल्ड बाय सॉइल टेक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पार्ट है। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से इसको यहीं पे क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इस स्टेज पे है प्रिपरेशन के, कि यहां से हमारा एक भी क्वेश्चन कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हर एक पॉइंट को यही के यही क्लियर करेंगे। क्लियर है, सबको क्लियर है, एक बार हाँ बोल दो। प्लीज वंस मोर। ओके 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 ओके, चलो कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, तो एक बार फिर से इसी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो एक बार अच्छे से ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, है ना। समझो, अब मुझे एक बात बताओ, हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, राइट, फुल्ली सैचुरेटेड। इसमें हमारे पूरे मैक्रो और माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, लाइक टोटल पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर। इसमें हमारा जो सॉइल वाटर लाइक सक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रितु मुझे बताओ, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जहां पे मैक्रो और माइक्रो पोर्स पूरे भरे हुए हैं,
है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कंप्लीटली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे हमारा सॉइल वाटर सक्शन प्रेशर क्या होगा? जीरो, राइट? जीरो है, ये बात हमें क्लियर है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेरिक सॉरी मैट्रिक सक्शन प्रेशर जो है वो जीरो है। जीरो है मतलब क्या है? मैक्सिमम है। इसके बाद जैसे जैसे हमारा वाटर कंटेंट कम होगा, यहाँ वाटर कंटेंट हमारा मैक्सिमम है, वाटर मैक्सिमम है तो हमारा सक्शन जीरो है। ठीक है, जीरो है मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगा, है ना, as soon as it will reach field capacity, suction values will fall to -1/3 atmosphere. Is it? Suction value will fall to -1/3 atmosphere. That means suction उसकी नेगेटिव वैल्यूज में जा रहा है ना? The potential is getting lowered. Right? जैसे जैसे पोटेंशियल कम हो रहा है वैसे वैसे वाटर कंटेंट भी कम हो रहा है। तो जब हमारा वाटर कंटेंट हाई है, सक्शन कम है, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम हो रहा है सक्शन बढ़ रहा है। अभी क्लियर है? ओके ओके, वेरी गुड। सो बस यही है कि इतना हमें क्लियर क्लियर याद रखना है कि जब वाटर पोटेंशियल हाई है ना, वाटर रिटेंशन इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर। व्हेन देयर इज हाई वाटर पोटेंशियल इंडिकेट्स लोअर सक्शन। लोअर सक्शन मींस more water content, more water content, that means macro and micropores all are involved in water retention, and hence it is dependent on soil structure. Whereas in the condition of lower potential means high suction, only micropores are generally involved in the lower potentials. That means water content is low. Water content is low, that means it will be dependent on soil texture. Easy? So moving to the next question, we have another match the following type of question, a very easy question. चलो इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। चलो ये तो ठीक है, इजी था, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन था। मुझे ये बताएंगे कि सॉइल फैमिली का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? द कंसेप्ट ऑफ सॉइल फैमिली वाज गिवन बाय वेरी गुड अनिल, वेरी गुड वेरी गुड। इट वाज गिवन बाय बाल्डविन। तो ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए, राइट? So the correct answer is option A. So moving ahead, next question is asking about heavy minerals. See, अभी हमने heavy और light minerals के बारे में discuss किया था. So just try to answer this question. Yes, very good Ritu, very good Raman, Anil, very good in 1938. Yes, very good, very good. निखिल सर तो एकदम फायर पे है भाई. So option C. Okay. So अभी हमने देखा था कि heavy और light minerals क्या है. So light mineral का example muscovite के अलावा और कौन से examples थे? Quartz and all types of different micas were example of light minerals. So these are light minerals. Only limonite and olivine are heavy minerals. So यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, right? Yes, very good guys, very good. So moving ahead to next question. Next question is asking about dry sieving technique of structural analysis is discovered by. It was given by
Yes, this is a direct question. This dry sieving technique was given by Chepil, whereas wet sieving technique was given by Yoder. सो ड्राई सीविंग और वेट सीविंग टेक्निक में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? Yes, wet sieving technique was given by Yoder. Very good. But what is the basic difference between wet sieving and dry sieving techniques, guys? Can anyone tell? ड्राई सीविंग टेक्निक में कुछ नहीं है, बस सिंपली वी आर passing the particles, soil particles or grinded soil particles through our mesh or sieve, and in wet sieving technique we are either using some alcohol or some solution in order to break the binding between soil particles, right? So this is the basic difference between dry and wet sieving technique. So this is the correct answer. Then moving ahead to the next question, we have given below are the two statements. One is labeled as assertion and reason, and assertion is saying that hydrogen peroxide or sodium hypochlorite are used for oxidizing organic matter before mechanical analysis of soil, and reason says that organic matter is the major cementing agent in the soil. So what do you think इसका आंसर क्या होगा? Option A. क्वेश्चन गूगली भी हो सकता है, सोच लो. ऑप्शन ए ही होगा. ऑप्शन सी, assertion is correct but reason is not correct. कैसे भाई रमन, रीजन करेक्ट क्यों नहीं है, ये बताओ. See, the correct answer for this question will be both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. Why? Because see, both the statements are correct, but there is no direct link between statement like assertion and reason. Let's understand. See, it is correct that hydrogen peroxide or sodium hypochlorite are used for oxidizing organic matter, but it should have been mentioned in the reason that why it is used. We know that organic matter is the major cementing agent in the soil, and if this could have been flipped, अगर reason को assertion की जगह और assertion को reason की जगह रखा होता, तो then there might have been some chance कि both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. But here this question is a bit skeptical, controversial भी है थोड़ा, इसका answer correct करना थोड़ा confusing होगा, but there is no direct link between two the statements, right? As statement 2 is not directly explaining assertion. So the correct answer for this question is both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Then we have next question. Permeability classification given by yes, O'Neill gave the permeability classification. Then what did Richards give? Can anyone tell me? Richards ने क्या दिया था? What is Richards associated with? 7 classes by O'Neill. Yes, very good. These 7 classes are given by O'Neill. These are permeability classes. ये टेबल बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए डाला है, एक बार इसको याद रख लेना. टेंसियोमीटर, yes, Richards is associated with tensiometer along with Gardner.
Richards and Gardner are known for design of tensiometer, modern tensiometer. Can anyone tell me who gave the original design of tensiometer? ओरिजिनल जो प्रिमिटिव डिजाइन था टेंसियोमीटर का वो किसने दिया था? कैन एनीवन टेल? लिविंगस्टन. यस, वेरी गुड. दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हु गेव द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ टेंसियोमीटर? लिविंगस्टन गेव द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ टेंसियोमीटर. ये सब याद रख. स्टीवेंसन नहीं है भाई, लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन. यस. एंड व्हाट अबाउट डिवॉक्स? डिवॉक्स ने क्या दिया था? व्हाट डिड डिवॉक्स गिव? यस, कंसेप्ट ऑफ रूट सीसी. इसके दो स्टेटमेंट्स 2025 के पीवाईक्यूज में भी इंक्लूडेड थे. So moving ahead to the next question, we have the number of ATP required to fix one molecule of atmospheric nitrogen is. Yes, this is another direct question. IEEE से सीधा उठा के रख दिया है. कंफ्यूज नहीं होना है. The number of ATP required to fix one molecule. ये पढ़ेंगे कि कितने molecules के बारे में पूछा गया है. If it is asking about one molecule, it will be 16, right? Yes, yes, very good, very good. So this is the reaction from IEEE. Page number 399 पे ये reaction है. As such, जाके देखना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट में. So 16 ATP molecules are required for fixation of one nitrogen, right? Just keep this thing in mind. इतनी reaction वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, but still 16 molecules of ATP are consumed for fixing one molecule of nitrogen. एक क्वेश्चन शायद थोड़ा स्लाइड्स में ऊपर नीचे हो गया. So next we have, next question is given below are two statements labeled as statement 1 and statement 2. So statement 1 says that slow cooling creates larger crystals, and statement 2 says rapid cooling creates large number of small crystals. So what do you think will be the correct answer for this? Option A. Option A. Yes, yes, very good. The correct answer for this question will be option A. Now let's understand why option A. Just because, see, what happens, this slow cooling generally occurs beneath the earth's surface or under the earth's surface. Right? So when this cooling of magma is occurring under earth's surface, there is less action of external cooling agents or cooling factors, right? So the cooling will be slow. The cooling will be slow and there will be less dispersion, right? So less disturbance in cooling, less disturbance during cooling, so the particles get more time to come closer, and hence it leads to formation of larger rock particles. So slow cooling creates larger but less amount of rock particles, and rapid cooling occurs over the earth's surface, so it forms large number of small crystals. इसको भी अच्छे से याद रख लेना है, इसमें confusion होती है, but never get confused for this. Fast cooling less stable, completely सही नहीं होगी भाई अनिल. ये line like स्लो कूलिंग क्रिएट्स हार्ड क्रिस्टल्स कह सकते हैं, बट फास्ट कूलिंग लेस स्टेबल पार्टिकल्स ही बनाएगी ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों नहीं है ये आपको जब आप एमएससी में जाओगे, इन डेप्थ सब सारे रॉक्स और मिनरल्स के प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव अनदर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप सब यू सॉल्व कर लोगे. ऑप्शन ए. Very good, Ritu. Very good, Nikhila. The correct answer for this question will be definitely option A. So, apart from this, like
Dokuchev is the father of soil science. ये सही है. Can anyone tell me who is known as father of soil science in India? Can anyone tell? Yes, very good. J.W. Leather is regarded as father of soil science in India, and he defined soil. What was his definition of soil? Can anyone tell me? What was Leather's definition of soil? Yes, very good, Raman. Very good, Nikhila. Very good, Anil. What was Leather's definition of soil? Leather defined soil as the natural medium for the growth of plants. So this was his definition of soil. इसको भी अच्छे से याद रखना है. Then next question, we have another assertion reason type of question. The question is saying that soil water potential is negative under normal field conditions, and reason for this is the presence of solutes and matrix components decreases the capacity of water to perform work. So what will be the correct answer for this? Devika is saying correct answer is option A. Yes, very good. Very good. Now only we have seen that as soon as the water falls, like water holding capacity से जब नीचे आ रहा है, like field capacity पे आ रहा है, that means normal field conditions पे आ रहा है, so the soil water potential is falling below, like 1/3 bars field capacity पे है. Field capacity मतलब normal field conditions पे हम उसको consider कर सकते हैं. So yes, soil water potential is negative under normal field conditions, and the reason for explaining for this is the presence of solutes and matrix components decreases the capacity of water to perform work. As we know that soil water potential is the work done by water, like work done by soil to hold water. So जब solutes और matrix components बढ़ जाएंगे, so this is decreasing the capacity of water to perform work, right? So both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for assertion. Is it clear? समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्लेन करना है डबल से? फिर से एक्सप्लेन करना होगा तो अभी बोल दो. चलो, clear. So moving ahead to next question. Next question is asking about optimum moisture content for tillage operation is. Yes, very good, Anil. Option C. Yes, very simple. This question has included the moisture limits, like forms of soil consistency which are suitable for tillage, and we know that soft and friable consistency is optimum for tillage operation. So the correct answer will be option A and B only. And what is the PF value? 4.5 to 2.8. Similarly, hard or harsh form of soil consistency has the PF value of 4.5, and viscous has a PF value of 0. So if you are somewhere asked to arrange the forms of soil consistency in the increasing or decreasing order of their PF values, you should be able to answer this question. So इस PF values के part को भी अच्छे से याद रखेंगे, right? Then moving ahead to the next question. Question from general agriculture. Question is asking that bond strength follows the order. बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉलोज. अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है यार. बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के बारे में तो 11th 12th में पढ़ ही रखा होगा, राइट? Bond strength follows the order of ionic strength, covalent bond and hydrogen bond, whereas bond length is exactly reverse. Bond length follows the order hydrogen bond, having highest bond length, then covalent bond, and then ionic.
अब समझते हैं कि क्यों बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी. देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है? आयनिक सॉलिड्स की, राइट? आयनिक सॉलिड्स हैज लीस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द वीकेस्ट अमॉन्ग these three, right? So ionic bond में क्या हो रहा है? Complete sharing of atoms between two particles. When there is an ionic solid, there is complete exchange of atoms between two, like complete sharing of atoms between two molecules, right? So the strength of ionic bond is highest. Highest is the strength, like particles are more close to each other and hence bond length is less. Like what is the bond length? Bond length is the distance between the two nuclei of two molecules, like two bonding molecules. So bond length is least when bond strength is highest. ये relation याद रखना है. And similarly bond order refers to the number of shared pair of electrons. इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे. This question is from general agriculture और since general chemistry हमारे part में included है तो उसको भी हम skip नहीं करेंगे. Then we have next question. Very simple question, but confusing. So what will be the correct answer for this question? Igneous and metamorphic rocks constitute over 95% of the Earth's surface. And sedimentary rocks cover 74% of the Earth's crust. What do you think? Anil is saying the correct answer is option B. नहीं भाई नहीं. ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा. सोचो क्यों. समझते हैं. देखो अर्थ सरफेस की बात हो रही है. सरफेस की बात हो रही है मतलब कंसिडर कर लो कि अपर 5 किलोमीटर की बात हो रही है ना? ऐसे ही पढ़ा है ना कि अपर 5 किलोमीटर में इतना है उतना नहीं है, राइट? सो अपर 5 किलोमीटर मतलब अर्थ सरफेस और अर्थ क्रस्ट मतलब टोटल अर्थ एज अ होल. अब बताओ अब क्या होगा इसका आंसर? यस. सो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स बिकॉज वी नो दैट अपर 5 किलोमीटर में सेडिमेंटरी रॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं 74%, whereas igneous rocks का composition जो है वो है 18%, right? And whereas when it comes to entire Earth's crust, then 95% of igneous rocks are there, and the rest 5% is occupied by sedimentary rock in case of entire Earth crust. So moving to the next question. Next question is another simple yet general chemistry question. What will be the correct answer for this question? Option D. सोच लो भाई सोच लो. Alkane, alkene, alkyne. Yes, very good. The correct answer for this question should be option A. अब कुछ अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस की जनरल फॉर्मूला और जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करी गई है. तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला पूछा गया है. तो ये हमें बिल्कुल पता होना ही चाहिए. ठीक है. और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर याद रख सको तो बहुत इजी है. अल्केन्स का sp3 है, अल्कीन्स का sp2 और अल्काइंस sp हाइब्रिडाइज्ड. ये याद रखो तो बेहतर रहेगा. Then moving to the next question, we have a statement saying reflectance increases when the options are clay content is high, sand content is high, and limestone is high. So what will be the correct answer for this question? सोचो.
Most of you are saying that the correct answer for this question is option C. Yes, the correct answer for this question is option C. You all are right, but let's understand why C. See, sand particles have lesser specific surface area. Less specific surface area, that means more reflectance. They will not be able to absorb and they will highly involved in reflectance. Whereas clay particles have higher specific surface area and their structure is very irregular. So when the light particles bombard on clay particles, they just get refracted instead of getting reflected. So reflectance will increase when there is high sand content, and limestone we know that it is a rich type of sandy mineral. So the correct answer is yes, option B and C only. Then we have next question. It is asking about first demonstration of atmospheric nitrogen fixation was done by. Yes, Ritu. There is also role of color. We know that sand particles are generally light in color and hence they will have high reflectance. They won't absorb much light. Whereas clay particles are generally darker in color, so they will absorb, like the absorbance of clay particles will be high. PK First demonstration of atmospheric nitrogen fixation. Question सही से पढ़ो. PK Day is not the correct answer for this question. The question is asking about atmospheric nitrogen fixation. No, RN is not the correct answer for this question. The correct answer for this question is Bejernik. PK Day is associated with BGA's ability to nitrogen fixation. Ability of BGA for nitrogen fixation. Whereas RN is associated with nitrogen fixation in paddy soils. Is it? सही बोल रहा हूँ? Yes, the correct answer is option D. Very good, Khushi. And BP Pal, we know that BP Pal was the first Director General of ICR. So just remember that Aran Singh is associated with paddy soils. PK Day has BGA role in BGA nitrogen fixation, whereas Bejernik discovered the atmospheric nitrogen fixation phenomenon. Yeah, he is also related with rose breeding. Yes, BP Pal is also related with rose breeding. Then we have next question, another assertion reason type of question. Nitrifying bacteria prefer mostly neutral to alkaline soils and fungi prefers mostly acidic soil. Very good, Ritu. Very good. Both the statements are correct, but reason is not the correct explanation for assertion, as both the statements are individually correct. See, these are exact line-to-line PDFs, like photographs from ISSS. Here we can see that the optimum pH for nitrifying bacteria is 6.5 to 7.5. So here it is clear that first statement is exactly correct. Then fungi. Fungi can grow in wide range of pH, but their population is more under acidic conditions. See, fungi prefer acidic conditions. Then here we are, like, whoever is watching new,
on this session, just don't forget to subscribe our YouTube channel and also share our live session with all of your friends who are preparing for ICAR PG Physical Sciences. And also अगर किसी ने हमारा mock test bundle या master batch course नहीं लिया है तो you can go through these courses. So moving to the next question, which type of microorganism is mostly present in compost pit? Mesophiles? नहीं भाई, mesophiles कैसे होगा? रमन? Yes, thermophilic bacteria will be present in compost pits as under anaerobic conditions after breakdown of organic matter, the temperature of the compost pit will be high and they have to thrive in higher temperature. So high amount of thermophilic bacteria will be present in compost pit. So here I have also mentioned some of the other classifications, like all the type of group of organisms: psychrophiles, psychrotrophs, mesophiles, thermophiles and extreme thermophiles, and their optimum temperature range. So every one of you must be thorough with this optimum temperature ranges, because this can be a very important source of questions in the exam. So moving to the next question, under saturated conditions, pressure potential can be measured by? Piezometer. Yes, very good, very good, very good. Piezometer is used to measure pressure potential under saturated condition, and under unsaturated condition, tensiometer is used. Now, can anyone tell me why under unsaturated conditions tensiometer is used and why not under saturated conditions? चलो इसका आंसर ढूंढ के लाना भाई घर से. वैसे बहुत सिंपल है. See, here we can see that hydraulic head is the numerical equivalent of height of water column exerting force, and under unsaturated conditions it is measured by tensiometer. So moving to the next question, we have first statement saying sandy soil rate of capillary rise is more than clay soils, and in statement 2 is saying that rate of capillary rise in clay soils is less than sandy soils. So what do you think will be the answer for this? Water will not equilibrate. Yes, very good, Aman. Very good. Very good. Because the potential of tensiometer, at what range it can work? Only till 0.85, minus 0.85 atmosphere pressure तक ही tensiometer का range है. And at saturated conditions, the atmospheric suction or metric potential is 0. Hence, tensiometer is not used in saturated condition. Everyone is saying that. How? Why B? Option B? नहीं भाई, दोनों statements बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. थोड़ा सा grammatical positioning में difference है. बाकी both the statements are exactly correct. Now let's understand why. है ना? समझते हैं क्यों. Rate of capillary soils is high in sandy soil, whereas height of capillary rise is more in clay soils. Height of capillary rise अगर पूछी जाए तो it will be more in clay soils. अब ये भी समझते हैं क्यों. Because when water is capillary rising in sandy soils, there is more number of macropores, right? तो macropores ज्यादा है, तो जितना भी water बढ़ेगा वो हाई रेट से बढ़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक कम हाइट तक बढ़ेगा. बट व्हेन इट इज अबाउट माइक्रोपोर्स इन क्ले सॉइल्स, इट विल राइज टू अ मोर हाइट बट लो रेट में. So this is difference between rate of capillary rise is high in sandy soils, whereas height of capillary rise, height is more in clay soils. Clay soils has more micropores. So this is the fact. Says macro rate is high in sandy soils. Clear है?
So moving to the next question. Next question is another match the following type of question. Yes, the correct answer will be option A और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया एक्स्ट्रा है नहीं. हाँ, बट स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट हम एक बार देख लेंगे. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल settling under the influence of gravity in a fluid of a given density and viscosity is proportional to the square of its radius, and it is given by the equation V is equals to 2 by 9 gr square. And these are some assumptions of Stokes law. Assumptions of Stokes law can be important for statement type of questions. So इसको भी एक बार देख लेंगे. Then moving to the next question, there are two statements. One is labeled as assertion and another is labeled as reason. Assertion is saying that quartz is strongly resistant to weathering, and reason says that quartz is very densely packed and occurs in high degree of purity. What do you think is the correct answer for this question? Option A. Yes, option A is the correct answer for this question, as we know that quartz is highly resistant to weathering, and this is the stability series given by yes, very good Abhijit. Where were you, bhai? अभी तक कहाँ थे? Yes, stability series was given by Goldich in year 1938. And who gave the weathering indices? Weathering indices were given by Jackson. Yes, Jackson in year 1964. Very good. So moving ahead to the next question, which among the following is or are soil conditioners? So select the correct answer for the following question. Option D, A, B and C. Very good Raman, very good Aman, very good Ritu, very good Nikhila. So मुझे ये बताओ कि ये आर्टिफिशियल सॉइल कंडीशनर्स है या नेचुरल सॉइल कंडीशनर्स है, और अगर ये पीवीसी फॉर नॉन आयनिक. ओके, सो मुझे ये बताओ कि ये नेचुरल सॉइल कंडीशनर्स है या आर्टिफिशियल सॉइल कंडीशनर्स है, और अगर ये आर्टिफिशियल है तो इनके अपोजिट नेचुरल सॉइल कंडीशनर्स के एग्जांपल्स भी बताना कुछ. Yes, very good. These are synthetic soil conditioners. But what are the examples for natural soil conditioners? Yes, apart from organic matter को छोड़ के. EDTA होगा. So soil conditioner is any material which is added to soil to improve the physical conditions of the soil. Then moving to the next question, which among the following is highly sensitive to small variation in salinity during soil moisture determination by electrical resistance method? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जिप्सम ब्लॉक. सोच लो भाई. श्योर हो जिप्सम ब्लॉक? Very good Devika, very good, very good. The correct answer for this question is
fiber glass block method. We also know that fiber glass block method is also known as electrical resistance method, and this method was developed by Boykos and Meek. And this method is highly sensitive to small variation and hence more precise, है ना? Small variations होने के बावजूद भी एकदम precise readings देती है. So the correct answer for this question is option B, fiber block method, which is also known as electrical resistance method. Here you can see the description of electrical resistance method, and the correct answer for this question is fiber block method. So moving to the next question, we have two statements regarding soil structure and texture. First statement says that soil structure is a dynamic property, and statement 2 says that soil texture is a dynamic property. So what will be the correct answer for this? Yes, the correct answer for this is option C, as we know that soil texture is an inherent property of soil and it cannot be altered. So these are four like soil structures, four different type of soil structures. Can anyone tell me which is the most commonly found soil structure? चलो ये क्वेश्चन आएगा ही, इसको बाद में देखते हैं. The next question is another match the following type of question. Salaries. What are you trying to say, bhai Anil? So match the following elements in column A with their discoverers in column B. Option D. So Ritu is saying that the correct answer for this question is option D. What do you think? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? Very good अमन. निखिल सर भी एकदम आज पूरा सेशन फुल जोश में अटेंड कर रहा है. ओके अभिजीत एंड हाउ ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी कैसे होगा? अभिजीत कैसे होगा ऑप्शन बी? नहीं, सेशन नॉप आर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ सल्फर, then molybdenum was discovered by Arnon and Stout, calcium by Sprengel, and nitrogen by Saussure. So the correct answer for this question is option D. And here I have mentioned all the elements and their discoverers. तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जब भी रिवाइज करोगे तब अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है. और अगर कोई पूछ ले, समझो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? व्हाट इज द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट? Yes, nickel in 1987. Very good. Then moving ahead to the next question. The question is a fill in the blank type of question. Among the following, dash and dash are considered as ballast elements. So what will be the correct answer for this? Option C. Recently discovered essential element. हाँ, yes, let me correct myself. यहाँ मैं recently discovered essential element की बात कर रहा था. To be more precise, I was talking about recently discovered essential element. And the question here is asking about ballast elements. So what are the examples of ballast elements? Yes, very good. The correct answer for this is aluminium and silicon, because aluminium और silicon ऐसे दो elements है which are very abundant, like बहुत ज़्यादा amount में nature में found out है,
लेकिन still they don't play any active role in directly in plant nutrition. Hence these silicon and aluminum are considered as ballast elements. They just have important role in structural framework, aluminum and silicon, and hence मैं इसको हमेशा ऐसे ही याद रखता था, आलसी ballast, है ना, mnemonics for this ballast element is आलसी. आलसी था इसलिए ballast रह गया, plant nutrition में अपना रोल नहीं जमा पाया, right? Then moving ahead to next question, saltation accounts for dash % of the total movement through wind erosion. बहुत ही simple question है और एकदम direct. इसका आंसर क्या होगा? Option B. Okay, अगर इसका ऑप्शन बी है तो मुझे ये बताओ कि 40% कौन से इरोजन लाइक मैकेनिज्म के लिए होगा? सस्पेंशन या सरफेस क्रीप? सोच लो. वेरी गुड. सस्पेंशन के लिए 40% और 5 to 25% फॉर सरफेस क्रीप. तो अगर तुमको कोई पूछे क्वेश्चन कि अरेंज द 3 mechanisms of wind erosion in their decreasing order of relativity of occurrence, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? साल्टेशन फॉलोड बाय सस्पेंशन followed by surface creep. This is on the basis of relativity of occurrence. But अगर कोई particle size के basis पे पूछ ले तो on the basis of particle size, particle size in the increasing order, like lowest to highest. Yes, the correct answer will be suspension, then saltation and surface creep. नेक्स्ट स्लाइड में इसके पार्टिकल साइजेस भी मेंशन किए गए हैं. सी साल्टेशन अकाउंट लाइक 0.1 to 0.5 mm डायमीटर और 1 mm से ज्यादा अगर किसी का डायमीटर हो तो उसको सरफेस क्रीप में कंसीडर करते हैं. रोलिंग एक्शन इज आल्सो नोन एज सरफेस क्रीप. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल फर्टिलिटी. इसको सॉइल फर्टिलिटी के क्लास में बहुत अच्छे से कवर कराया था, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर एक झटके में बता सकते हो सारे के सारे. ऑप्शन ए. कैसे होगा भाई ऑप्शन ए? इतना इजी क्वेश्चन अगर गलत करके आओगे तो 4 मार्क जो फ्री में मिल रहे हैं उसको तो उड़ा ही दोगे. ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल, राइट? सही बात है. बट ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव, ये भी सही बात है. लेकिन असर्शन और रीजन एक दूसरे का किस प्रकार से समर्थन, लाइक व्हाट इज द लिंक बिटवीन असर्शन एंड रीजन? हाउ इज रीजन एक्सप्लेनिंग असर्शन? नो, राइट? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. हाँ, अगर ये होता कि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल एंड द रीजन गिवन फॉर दैट इज, अगर ऐसा गिवन रीजन होता कि प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर डिफरेंट पैरामीटर्स, तो रीजन सही हो जाता. लेकिन अभी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट दीज आर टू इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सो सी सॉइल फर्टिलिटी की और सॉइल प्रोडक्टिविटी की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है और समझते हैं कि क्यों सॉइल, अगर कोई सॉइल प्रोडक्टिव है तो उसका फर्टाइल होना जरूरी है. बिकॉज सॉइल प्रोडक्टिविटी इज अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट एंड टाइम. सो अगर कोई सॉइल प्रोडक्टिव है तो उसका फर्टाइल होना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ फंक्शन.
अगर कोई सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो अगर कोई सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव होगी भी। मतलब अगर कोई सॉइल फर्टाइल है तो उसके अलावा भी क्लाइमेटिक कंडीशंस और अदर कंडीशंस अगर साथ दे तो ही सॉइल का प्रोडक्टिव होना भी नेसेसरी है। बट लेकिन अगर कोई सॉइल प्रोडक्टिव है तो डेफिनेटली उसका फर्टाइल होना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ fertility management and time. So moving to the next question, anti-Gibbsite effect was given by another direct question. क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Anil is saying that the correct answer for this is option A. Abhijit is also saying option A. Aman is saying that the correct answer is option C. Raman is saying option A. Abhijit and Anil. Yes, very good. The correct answer for this is option A only. एंड गोल्डिच, रिचर्ड्स और जेनी के कॉन्ट्रीब्यूशंस तो हमको पता ही है, हमने अभी जस्ट रिसेंटली देखे हैं। नो, इट विल नॉट बी सी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए ओनली। जैक्सन गेव एंटी गिब्साइट इफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। देन another direct question and a very easy question, lessivage term was coined by B. Yes, very good. Lessivage term was coined by Duckafour. Then here let's understand what is lessivage. See, lessivage or clay migration is the removal of clay, particularly of fine clay in suspension form from upper part of the soil profile and its accumulation in the lower profile part. So this is lessivage, and there are some other important pedogenic processes which are of utmost importance. अगर इन सारी प्रोसेसेस को याद करो तो डेफिनेटली एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो गलत नहीं ही होंगे, राइट? Then moving to the next question. Our next question is another statement type of question, and it is saying that in foliistic, like in foliistic epipedon, surface layer is never saturated with water for more than 30 cumulative days. And second statement is in histic endopedon, surface layer is saturated with water for more than 30 cumulative days. So what do you think? What do you think is the correct answer for this question? Both statements are true. Okay. Okay, Aman is saying that both statements are true. ओके ओके ओके, जल्दी का काम शैतान का भाई, अच्छे से पढ़ लो एक बार। हैव अ क्लोज लुक टू द क्वेश्चन, ठीक है? खेल गया तुम्हारे साथ क्वेश्चन मेकर, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस देने के बाद एक गूगली फेंक दी और तुम सब फंस गए। अच्छे से पढ़ो। नहीं रमन, इसका करेक्ट आंसर बी भी नहीं होगा, ना ही ए होगा। छोटी सी गलती है बिल्कुल। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज हिस्टिक इज एन इपिपेडॉन एंड नॉट एन एंडोपेडॉन। हिस्टिक इपिपेडॉन अगर यहाँ लिखा होता या सरफेस होराइजन लिखा होता तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हो जाती, पर सिंस हिस्टिक एंडोपेडॉन है तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई, राइट? और ऐसी ही गलतियां हमें एग्जाम में नहीं करनी है गाइस। तो ये कुछ इपिपेडॉन्स और सारे इपिपेडॉन्स के कैरेक्टर्स है, पॉलिस्टिक इपिपेडॉन, हिस्टिक इपिपेडॉन, मेलानिक, मॉलिक, एंथ्रोपिक, अम्ब्रिक, ऑक्रिक और प्लागेनन ग्रोसेरोजेनिक। सो मुझे ये बताएंगे कि 2 मैनमेड इपिपेडॉन्स कौन से हैं? अमॉन्ग 9 इपिपेडॉन्स 2 मैनमेड इपिपेडॉन्स कौन से हैं? यस यस निखिल सर, इपिपेडॉन है हिस्टिक। एंथ्रोपिक एंड प्लागेन, yes, very good. Anthropic and Plagen are 2 man-made epipedons.
Then moving to the next question, some associated elements and their deficiency symptoms are asked here. Just try to answer this question. Option C. C. Very good. Very good. The correct answer for this question is option C. Now let's understand why. Nitrogen is associated with V-shaped leaves. Then calcium is responsible for bitter pit in apple, right? Then molybdenum for whiptail in cauliflower, and sulfur is responsible for tea yellow disease or any yellowing type of disease is the general symptom of sulfur. So the correct answer for this is option C. And this is an important table from ISSS. अगर ये टेबल आपको पता है तो आप सारे एलिमेंट्स के जनरल सिम्टम्स, जनरल डिफिशियंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स गेस कर सकते हो. तो इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी एक शीट बना लो, अपने स्टडी डेस्क के आगे चिपका दो. नहीं, डी नहीं होगा भाई, सी होगा इसका करेक्ट आंसर. और ये सारे डिफिशियंसी सिम्टम्स एकदम मुंह जबानी याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? और डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस तो इसमें से एग्जाम में आने ही आने हैं. चलो, given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other as reason. And the assertion is MOP is not recommended in potato and tobacco. And the reason says that it improves burning quality in tobacco. So what do you think will be the correct answer? Yes, sir. C is right. Hello. Hi, bhai. Hi. Hi, Rehan. कौन हो? Yes, the correct answer will be assertion is correct and reason will not be correct. Why? Because this chloride rich fertilizers like MOP is KCl kind of fertilizer, and this chloride deteriorates the burning quality in tobacco and quality of fries in potato. Hence, it is not recommended in potato and tobacco. So the correct answer is option C. Then moving to the next question, the boundary between soil and the continuous non-coherent underlying material is known as. Option C. A कैसे होगा भाई? C और B दोनों कैसे होगा? Correct answer is option B only. This is a definition of पैरालिथिक कॉन्टैक्ट. whereas अगर ये नॉन कोहेरेंट की जगह कोहेरेंट अंडरलाइंग मटेरियल होता तो इसका आंसर लिथिक कॉन्टैक्ट होता. यहाँ ISSS से ही ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने. Let's understand what is lithic contact. Lithic contact is a boundary between soil and the continuous coherent underlying material that has hardness of 3 and more. And lithic contact में roots का penetration negligible होता है. Roots cannot penetrate because of high hardness. But whereas paralithic contact is a contact between soil and continuous non-coherent material underlying, and its hardness is less than 3. Like hardness of more than 3 on Mohs scale, but roots can penetrate because of irregular and infrequent intervals. And petropheric contact is the boundary between soil and indurated layer of iron. नाम से ही पता चल जा रहा है petropheric, that is contact with iron rich layer. Yes, lithic, coherent and more than 3, and lithic
Paralithic is non-coherent, more than 3, but penetrative. Yes, very good. Then which type of moisture regime is mostly present in India? Another very easy question. Both may have more than 3. Yes, both have hardness of more than 3. Yes. Yes, very good. Anil, Aman, very good. Nikhila, Abhijit. Yes, very good Anil. 72% of उसटिक moisture regime is found in India. Very good, very good. अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही है. ऐसे ही रिवीजन को कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी ढील नहीं खानी है अभी से, राइट? तो here I have mentioned the broad moisture soil moisture regime are aquic, udic, ustic, xeric, aridic, toric, and their criteria are given in table 2. Like the moisture regime map of India, Segal shows that India is dominantly represented by ustic soil moisture regime covering almost 72%. That is 3/4, and followed by aridic and udic regimes. So India में only 3 predominant moisture regimes है, ustic, udic and aridic. So aridic का 16% area है and udic का 12. So this thing should be kept in mind. This is a screenshot from ISSS only. Then moving to the next question. Statement 1 is saying that biotite contains ferrous and magnesium ion in octahedral layer. And statement 2 says that bidylite contains aluminium and nontronite containing ion in octahedral layer. क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Yes, very good Anil. Try to answer this question guys. हम 2 आवर्स में सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और हमें 2 आवर्स में पूरा पेपर सॉल्व करना है. हमारे क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं. तीसरा सेशन है आज हमारा और लाइक मोर देन 1 hour 30 minutes ऑलरेडी हो चुका है एंड वी आर जस्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 43. जल्दी जल्दी सोचो इसका आंसर क्या होगा. So the correct answer for this question is option A. नहीं, option A is the correct answer for this question. Both the statements are true. Biotite is iron and magnesium, like it has iron and magnesium ion in octahedral layer, and bidylite contains aluminium whereas nontronite contains iron in octahedral layer. ये statements ऐसे कैसे याद रख लो, हो सकता है कि important होंगे. ठीक है. Then moving ahead to the next question. The next question is a question from remote sensing. Yes, अगर किसी को लैंडसैट यूएसए पता हो तो इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी. इंडिया का आईआरएस सीरीज है, देन यूरोपियन यूनियन हैज सेंटिनेंटल सीरीज एंड फ्रांस हैज स्पॉट. तो इसको अच्छे से याद रखने के लिए मैंने एक थोड़ी एआई जनरेटेड इमेज बना दी है तुम लोगों के लिए. यूएसए लैंडसाइट एंड जीपीएस, देन चाइना का बेडो और याओगान, देन रशिया के ग्लोनास दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना है. हो सकता है ये भी पूछ ले. देन इंडिया के नेविक और इनसाइट सीरीज के अलावा आईआरएस भी याद रखना है. देन जापान हैज हिमावारी को भी याद रख लेना, ये तो भूल नहीं पाओगे तुम. देन यूरोपियन यूनियन हैज गैलीलियो एंड सेंटिनेंटल सीरीज, यूके हैज स्काईनेट एंड ग्लोबसैट, then Israel has Amos and Ophek, and France has Spotter Argos series. So हो सके तो इसमें से कुछ नाम याद करने की कोशिश बिल्कुल करना, हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए. Then moving to the next question, mechanical measures to cover stream bank to prevent erosion is known as, like
what are the mechanical measures that are useful to prevent stream bank type of erosion? Yes, yes. Raurak Sir is telling that this satellite series also came in SRF 2025 exam. So this can be asked in अभी JRF के भी एग्जाम में आ सकता है, तो बिल्कुल important है, बिल्कुल याद रखना है. Yes, रौनक सर, point to be noted. So next question, mechanical measures to cover stream bank, sorry, mechanical measures to cover stream bank to prevent erosion is, what will be the correct answer for this question? Yes, option D is the correct answer. All the three, asphalts, geotextiles and stone gabions, are used to prevent stream bank type of erosion. The vulnerable stream bank should be protected by providing with spurs and retaining walls to control torrents. Structures like barrages, paved channels, etc. can be provided. Apart from asphalts, geotextiles, these torrent structures like barrages and paved channels can also be used to prevent stream bank type of erosion. Then moving to the next question for regional planning. सर्वे से क्वेश्चन है भाई, और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर पता चल जाएगा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सी, रिकॉग्निशंस सर्वे. यस, वेरी गुड. रिकॉग्निशंस सर्वे फॉर रीजनल लेवल ऑफ प्लानिंग. सो ये चार्ट है ISSS से. यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंटेंसिव स्टडी के लिए रैपिड रिकॉग्निशंस सर्वे, फॉर रीजनल प्लानिंग रिकॉग्निशंस सर्वे, देन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग semi-detailed survey, and for village level planning detailed survey is used. So the correct answer is option C, reconnaissance soil survey. अगर इसके स्केल्स याद रख सको तो बहुत ही अच्छा होगा. एंड फील्ड इतना जरूरी नहीं है, बट स्केल्स और काइंड ऑफ सर्वे और उसके एप्लीकेशंस अगर याद रखो तो डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा. Then moving to the next question, we have assertion reason type of question, and assertion says that fine soils are called as heavy soils, and the reason says because they are difficult to cultivate. What do you think will be the correct answer for this? Yes, very easy. Option A is the correct answer. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for assertion because we know that ये भाई ये गलती से आ गया है, मे बी कैनवा पे स्लाइड्स चेंज करने के बाद भी अपलोड नहीं होता है ऑनलाइन. सो हेवी एंड लॉइड सॉइल्स, sometimes fine textured soils are termed as heavy soils, and coarse texture soils such as sandy soils are termed as light soils. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. coarse textured soils are termed as light soils because heavy and light soils ये concept totally ease of cultivation या tillage के basis पे दिया गया है, right? So moving ahead to the next question, the value of void ratio varies from, another simple and direct question. बहुत ही ग्रेसफुली इजी इजी क्वेश्चंस दिए हैं भाई क्वेश्चन सेटर ने. यस, इट रेंजेस फ्रॉम 0.3 टू 2. 2 से ज्यादा नहीं होगा, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ये 0.2 और 3 के बीच में, याद रख लो, कैसे भी रट लो, 0.3 टू 2 ही होगी वॉइड रेशियो की रेंज, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता है. देन हियर आई हैव मेंशन्ड दिस. व्हाट इज वॉइड रेशियो? द वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ total volume of pores to the total volume of soil solids, and it is expressed as a fraction as shown in, ये फॉर्मूला है void ratio का, and it ranges from 0.3 to 2. So it is an important MCQ. Then moving to the next question, which of the following soil structure can be present in any part of soil profile? हाँ भाई, अभी तो ये स्लाइड में ग्रेस मिल गया ऑलरेडी. आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ
टिक किया हुआ है. हाँ, it's platy structure only. Let's understand why. See, this is a image from ISSS only. और यहाँ पे this table here you can see this may occur in any part of soil profile. And see, block like structure is most common in B horizon, and prism like both are found in B horizon, and this is common in arid and semi arid soils. तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से सॉइल्स में कॉमन है. एंड दिस spheroidal structure is a characteristic feature of subsurface A horizon, like surface horizon. See, characteristic feature of A horizon, and it is subject to wide and rapid changes. So spheroidal structure is a characteristic feature of A horizon, whereas plate-like structure is found in any part of soil profile. Then prism-like and block-like structures are very common in B horizons. ये तीन चीजें अच्छे से याद रख लेना. Yes, we can, like, we can't claim that it will be most widely occurring structure, but yes, it can be found in any type of. हाँ यार, रिकॉग्निशन सर्वे मान ही नहीं रहा है ये. कुछ कैनवा के लिंक की एरर है. मैंने चेंज तो करे थे. So given below are two statements. Statement 1 says that lime potential was given by Schoonever, and statement 2 says that soil water potential concept was given by Buckingham. So क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी. श्योर हो? ऑप्शन ए कह रहे हैं कुछ लोग, कोई कुछ लोग ऑप्शन डी. सबके आंसर गलत है भाई. इसका आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, हाँ, ऑप्शन डी होगा. लाइक स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. मैं ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो रहा था. सो लाइम पोटेंशियल इज गिवन बाय स्कोफील्ड एंड टेलर. अगर ये स्टेटमेंट होती तो ये सही होता. तो लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला. yes, Schoonever gave gypsum requirement. Yes, very good. pH minus half PCA is the formula for lime potential. ये भी एक important formula है, याद रख सको तो रख लेना. This is mentioned about lime potential. Lime potential was given by Schofield and Taylor in 1955, and its formula is pH minus half of PCA. Then we have next question. Very easy, match the following type of question. इसका आंसर आप ही लोग मुझे दो. Yes, the correct answer for this question will be option A only. ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में ऐसे का ऐसा आया था और इम्पोर्टेंट था, इसलिए इंक्लूड कर लिया है, तो इसको भूलना नहीं है. ठीक है. Then we have next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion. Assertion says that P fixation is more in 1:1 type of clay minerals, and reason says that due to more weathering there is more occlusion of phosphate. So क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Option A. Yes, the correct answer for this is option A. Now let's understand why option A. Because
See, I have mentioned here, this is from phosphate fixation, factors affecting phosphate fixation, clay minerals play an important role. See, phosphorus is retained more in 1:1 type of clay minerals because kaolinite. See, 1:1 type of clay minerals means kaolinite, right? So kaolinite and are highly weathered generally, right? And these weathered soils are a source of aluminium and iron molecules which bind to phosphorus. So they increase phosphate fixation. Occlusion means like occlusion means adsorption simply. Then moving ahead to next question, we have the recharging of groundwater depends upon the water flow through. There are four options: root zone, Vado zone, capillary fringe zone. So what will be the correct answer? B. Ritu, Anil, Aman. Yes, the correct answer for this is Vado zone only. Now let's understand what are the different zones of soil water. There are four different zone, that is soil water zone or root zone. This extend from soil surface to the bottom of the root zone, and this is the uppermost zone. Then there is Vado zone. This is characterized by its unsaturated condition and recharge of groundwater. See here you can see the example of like you can pictorially consider this. So this picture is helpful in understanding what are the different zones of soil water. So this is aquifer. Aquifer is also known as water table or groundwater. And when this type of aquifer is above the groundwater, then it is known as perched water table. And the unsaturated zone above the groundwater zone is known as Vado zone, and Vado zone is important for recharging of groundwater. Then capillary fringe zone, it is nearly saturated zone due to capillary rise from the groundwater, and it is known as lowermost zone, and the groundwater is known as aquifer. So moving ahead to the next question, Peltier effect is commonly seen in. Very good Ritu, very good. Thermocouple psychrometer. Then apart from Peltier effect, what other effect is seen in thermocouple psychrometer? Can anyone tell? Yes, very good Nikhila. Very good Anil, very good Raman. Thermocouple psychrometer sees, yes, very good. Seebeck effect. So here are the definitions of Seebeck effect and Peltier effect. You can go through these definitions. When one junction is raised to higher temperature than the other, the contact potentials of two junctions between are different, and hence there is flow of electric current, and this effect is known as Seebeck effect. Whereas Peltier effect is when both the junctions have same temperature, and if one junction is cooled and other is heated by passing an electric current through the junction, then that effect is known as Peltier effect. These screenshots are from treatise only, bhai. Then we have next question. Statement 1 says coarse grain rock weathers faster than fine grain rock, and statement 2 says basic rock weathers faster than acidic rock. So what do you think will be the correct answer? Yes, both these statements are true. Now let's understand why. In coarse grain rocks, more surface area, more surface area is exposed to external forces of weathering, and hence they are able to weather faster. And in basic rocks, they can easily associate it with any form of feathering action outside
Hence, basic rocks weather faster than acidic rocks. But whereas acidic rocks have specific requirements in case of reactions, so they weather slowly than acidic rocks. So the correct answer is both statement 1 and 2 are true. Then we have next question, another simple question. मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप लोग ही मुझे दे सकते हो. ऑप्शन ए. नहीं भाई, ऑप्शन ए कैसे होगा इसका आंसर? The correct answer for this question is option 2. General definition of pedology is study of soil genesis, classification and mapping. Then petrology is the study of rocks, scientific study of rocks including their origin, composition. Yes, the correct answer is option B. See, here I have mentioned the definitions of petrology, petrography and petrogenesis, and pedology की definition तो हमें consider करने की जरूरत ही नहीं है. Like the scientific study of rocks and minerals is known as pedology. Then moving to the next question, coefficient of viscosity of water is 0.0089 poise, 0.0089 dynes per second centimeter square, or 1 dyne second per centimeter square. What will be the correct answer for this? Yes, very good, Aman. The correct answer for this is option C. Yes, yes, the correct answer is option C. Only A and B, because 1 dyne per second per centimeter square is at 20 degrees Celsius, but we measure coefficient of viscosity at 25 degrees Celsius, and at 25 degrees Celsius 0.089 poise is the coefficient of viscosity of water, and poise, 1 poise is equal to 1 dyne second centimeter square. So only these two options are correct. So here you can go through the general properties of viscosity of water. Then moving to the next question, ISRO was established in year. Yes, very good. ISRO was established in year 1969 under the chairmanship of Dr. Vikram Sarabhai. He was the first chairman of ISRO, and current chairman of ISRO is Dr. Narayanan. And where is the headquarter of ISRO located? Headquarter of ISRO is located at Bangalore. Very good. Then moving to the next question. Given below are two statements. One is labeled as assertion. Assertion says that soil air has 10 times more carbon dioxide than atmospheric air, and the reason given for this is low microbial activity in the root zone is responsible for this. What do you think is the correct answer? Yes, very good, Raman. Very good, Ritu. ISRO's headquarter is at Bangalore only. Assertion is correct, but the reason is not correct. Yes, very good. The correct answer for this is assertion is correct, but the reason is not correct, because high microbial activity in the root zone is responsible
for it. And here a comparative table is mentioned where atmospheric and soil air are compared in the composition of nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. You can see that carbon dioxide in atmospheric air is 0.03%, whereas in soil is 0.25%, which is almost 10% more. Sorry, 10 times more. Then last question for today's session, the canopy percent in non-forest or scrub area is non-forest or scrub area. Just focus. Canopy percent on non-forest or scrub area will be. What will be the correct answer for this? Option B. Nahi bhai Aman. It is asking about non-forest area and the correct answer for this question will be less than 10. Now here I have mentioned the canopy cover. For dense forest it should be more than 70%, then moderately dense forest 40 to 70%, open forest it should be 10 to 40%, and non-forest or scrub areas it should be often less than 10%. So that's all for today's session. If anyone new is watching this YouTube session, we request you, like रिक्वेस्ट करने से बेहतर वर्ड रहेगा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा कि आप हमारा मॉक टेस्ट बंडल या मास्टर कोर्स परचेस करें, बिकॉज जितना भी सारा क्वेश्चंस है, जितने भी सारा एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, वो हमने सारा मॉक टेस्ट और मास्टर कोर्स में अच्छे से कवर किया है, एंड इट इज now available for very affordable price. Master course is now available for 1999 and AgriAddict's master mock test series is just for 499. So it's worth it. एंड इसके मॉक टेस्ट बंडल के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, सारे जो मॉक टेस्ट होंगे उसके वीडियो सेशंस सब मिलेगा, तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल इन लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि अभी जितने भी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है, वो एक ऑनेस्ट फीडबैक अपना इस वीडियो लाइक स्ट्रीमिंग के एंड होने के बाद वीडियो पर दे, which will be very beneficial for every one of us. So thank you for joining today's session.